once we came back तो मैंने कई बोला कि who Asim क्या है वो, but I somewhere feel bad for him because he's stuck in this character. तो support मत करो because he's living in the La La Land जहाँ पे उसको लगता है that he is somebody who's मतलब वो तो कुछ तो कर जाएगा लाइफ में. Maybe he could have won the trophy. He was that strong. अभी तक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो गया है नहीं हुआ है. और जाने से पहले जो मैं मतलब बोल गया था वहाँ जाके पता लगा कि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. हर किसी को चाहिए थी यही ट्रॉफी कि नेक्स्ट सीजन में मैं फ्री में आऊँगा. ऑफ कोर्स देयर आर मोर चॉइसेस नाउ. There are more people coming in to work with me and they want to know me and वैसा है. अब जैसे करंट वाला स्टंट था तो उसके अंदर मैं रो भी गया था ऑलमोस्ट बिकॉज आई हैव अ प्लेट और वो करंट एक्स्ट्रा लगता ही था यार. बिग बॉस एक बड़ा खतरों का खिलाड़ी है. वो हमेशा होता है. हर साल जब एक नया सीजन आता है उसमें मेरा नाम आता ही है. और फिर वो नाम ही रह जाता है सिर्फ. शालीन एंड मी आर मोर ऑफ फ्रेनेमीज. वी लाइक टू पुट ईच अदर डाउन. This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express and I'm in conversation with the खतरों के खिलाड़ी 14 winner करणवीर मेहरा. नहीं तो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल देता. First of all, congratulations. Thank you buddy. You know, जाने के पहले you had promised that you will get the trophy and here it is. कैसी थी वो feeling, you know, holding this trophy in your hand? यार अभी तक सिंक इन नहीं हुई है. अभी तक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो गया है नहीं हुआ है. और जाने से पहले जो मैं मतलब बोल गया था वहाँ जाके पता लगा कि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. हर किसी को चाहिए थी यही ट्रॉफी और ट्रॉफी बेचारी एक ही थी भालू मेरा. तो लकीली मतलब हर किसी ने यही चाहा होगा कि उसके पास आए. लेकिन एंड में एक ही खिलाड़ी था और बहुत मज़ा आया. द जर्नी वॉज माइंड ब्लोइंग. इतनी ज़्यादा कि मैं वाईकॉम वालों को और खालिद वालों को बोल चुका हूँ कि नेक्स्ट सीजन में मैं फ्री में आऊँगा. लेके चलो मुझे. तो अब you know, having experienced all of this khatra and all, what has changed about Karanveer? Nothing has changed there. I don't think there's people have asked me this question before. There's nothing. I just want to do good work and with good people, be it reality, be it storytelling, be it theater, OTT, whatever. I am always been like that, and this is luckily it's just highlighted my personality, and I've always been into sports, always been into competitive sports, and I've been an NCC cadet. तो ये चीज़ें अंदर थी खून में. और जाने से पहले I trained myself towards strength and core training. तो वो सब काम आ गई. But अगर professionally देखा जाए तो of course there are more choices now. There are more people coming in to work with me and they want to know me and वैसा है. But other than that, personality wise nothing has changed. I've always been जब गया था तब भी ऐसे ही था. अब भी ऐसे ही. बस बाल छोटे करा लिए थोड़े. Also, you know, how much was it important for you to win this title? As important as it was for everyone else. Okay. I was very happy to be a part of this season because the batch that I went with, everybody was, अगर अपन खतरों के खिलाड़ी लैंग्वेज में बोले तो सब अंगार थे. तो सबको चाहिए था. Everybody was there to win it. Nobody had gone just to say कि हाँ I would be part of this and जितना चले चले जहाँ तक होगा. Nobody was like that. So I'm happy that I was the best amongst the best. Absolutely. And you know, I have to say this, one thing that I really liked about you on the show was you were one of the smartest players. सबको करणवीर अपने पत्ते नहीं दिखाते थे. Okay. Why do you say so? ऐसा क्या? Because you know, even if there was a difficult task, you performed the task. Okay. Stunt. It wasn't like you performed the stunt, and it wasn't like कि oh मुझे डर लग रहा है या ऐसा कुछ भी. You went with a very straight, mature approach towards it. You did like you made your work speak that time. Kind of, yeah. I So don't think was that, you know, was that like a kind of a strategy? Can we say that also? नहीं, I don't think strategies work here यार. I was very expressive. जो दिख रही थी चीज़. अब जैसे करंट वाला स्टंट था तो उसके अंदर मैं रो भी गया था ऑलमोस्ट बिकॉज आई हैव अ प्लेट और वो करंट एक्स्ट्रा लगता ही था यार. वो डोमिनोज वाला काफ़ी सारे लगे. काफ़ी सारे. आई थिंक देयर वर 4 स्टंट्स. Even the penultimate one, the one before the final stunt had current in it. तो वो crazy था. And I was very vocal about it कि मुझे लग रहा है भाई मतलब फट रही है. But जिसमें नहीं था जिसके अंदर I was there, I was very focused towards that one flag. कि one flag at a time and then another करते करते हो गए 15-20 जितने भी थे. Right. Also, you know,
So the reason why I also said that I really like, I feel you were one of the very smartest players also in this season was also because you had a very mature approach when even dealing with contestants. Like even when the Asim incident happened, okay, Karanveer was there, he had a stand, but he wasn't like all out there or anything like that. But personally, what was your take on that entire scenario? Because उसके बाद बाहर भी बहुत कुछ अगली हुआ है. यार वंस वी केम बैक तो मैंने कई बोला कि हु आसिम क्या है वो, बट आई समवेयर फील बैड फॉर हिम बिकॉज ही स्टक इन दिस कैरेक्टर. और वो बेचारा ही इज आई थिंक आई फील मोर आई थिंक द फैंस शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. दैट दे शुड नो दैट समबडी इज नॉट इन द राइट स्पेस. तो उसको सपोर्ट मत करो बिकॉज ही इज लिविंग इन द लाला लैंड जहाँ पे उसको लगता है दैट ही इज समबडी हु इज, मतलब वो तो कुछ तो कर जाएगा लाइफ में और कर गया है. बट अगर वो एटीट्यूड नहीं होता तो ही वुड हैव मे बी ही वुड हैव वन द ट्रॉफी. ही वाज दैट स्ट्रांग. तो उसका अगर माइंड फ्रेम सही हो ना तो यू कैन डू वंडर्स विद योरसेल्फ. अगर वो नहीं है तो बेचारा फर्स्ट आउट, ही डिडंट डिजर्व टू बी द फर्स्ट आउट. तो आई जस्ट फील बैड फॉर हिम. और क्या बोल सकता हूँ. Absolutely. Also now what's next, Karanveer? I have just shot for a song with Sana. It's called Kehna Galat Galat. Song is by Nusrat Fateh Ali Khan Saab, sung by Jyoti Nuran. The poster is out tomorrow. Please do watch it and promote it. It's an awesome song. I don't do music videos. I've always shied away from them. वो lip sync मेरे को थोड़ा अजीब लगता है. I'm also grown out of it. But this one is a mind-blowing piece, a mind-blowing work with a fantastic producer. Universal is the studio. And बहुत सही निकल के आया है. देखना please. But never seen before kind of a look also. And what about the television space? Because I hear that Big Boss 18 is happening. यार बिग बॉस एक बड़ा खतरों का खिलाड़ी है. वो हमेशा होता है. हर साल जब एक नया सीजन आता है उसमें मेरा नाम आता ही है. Okay. और फिर वो नाम ही रह जाता है सिर्फ. But do you think you are cut out for that house or that setting? I don't think so. I don't think I'm cut out for anything. Even for खतरों I just go for it. और हो गया तो हो गया वहाँ पे. So I don't think in that it's again the match. Okay. Whenever I go, it'll be our whole industry is so connected ना, like even you. आज अगर माइक बंद हो जाए, so you're not cut out for this. That means नहीं ना, ऐसा नहीं है. So we are all so dependent on each other. The light, the camera, the co-artists. So we can't say कि हाँ ये मैंने किया है बस. Also, if I'm not wrong, you started in 2004? 2005. So 19 years in the industry. Almost, yes. इन 19 सालों में एक ऐसा क्या लेसन है that Karanveer has learnt about being a celebrity, being famous or being an actor for that matter? मैं रोज एक नया लेसन सीखता हूँ, रोज एक नई गलती करता हूँ. सो आई डोंट टेक बैक अरे वो मैंने उस टाइम ऐसा किया था. सो दिस इज हाउ वी लिव लाइफ इन रेट्रोस्पेक्ट ना. अरे वो हुआ था ना, अब ये नहीं करूँगा मैं. सो इट्स ऑन अ डेली बेसिस दैट आई चेंज, द डेली बेसिस आई इवॉल्व. इट्स लाइक दैट. Also, now that you've endured this entire खतरों के खिलाड़ी journey, I believe कहीं ना कहीं आज के डे एंड एज में सच बोलना भी एक खतरे से कम नहीं होता. Which is why I have this fun game called Truth Bombs. Okay. What I'm going to do is I'm going to ask you a question and you have to tell me whoever from the contestants you think fits the bill. Okay. So who according to you, if not you, who do you think had it in him to win him or her to win the title? All the other 11 or 12 जितने भी थे, everybody had it in them to win it. I'm being very honest. It's just that उस टाइम पे मेरे सामने वो आया जिसके अंदर I was better. So had my elimination stunt had a current element in it, I would have been out the first. तो वो luckily it just happened that okay, it was a more agile stunt. This happened, that happened. Like I'm very good in water. I'm a trained lifeguard, but I never did a water stunt. I didn't get an underwater stunt. मैंने वो फ्लैग उठाया जब तक कोई और तीनों निकल गए थे. आई एम वेरी बैड विद क्रीपी क्रॉलीज. लकीली आई डिडंट गेट देम. तो मैं वही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे इट जस्ट सो हैपेंड. सो एनीबडी, कश्मीर, कृष्णा, इवन अभिषेक फॉर दैट मैटर, शालीन, सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे यार. Out of the 12 of y'all, who do you think scared easy? Got scared? Yeah, like got scared easily. Again in a different stunt, like with current, I think मैं और कृष्णा पागल हो जाते थे. With creepy crawlies again somebody else. तो अलग अलग था सबके लिए. शालीन हाइट के लिए एकदम रो गया, वो ये क्या हो रहा है. So we were all different for different stunts. Friendships that Karanveer will carry with him for life from this show. I carried one from before, it was Shilpa. I think I yes. carry out is Abhishek Okay. and Krishna.
And Shaleen भी also पहले था अभी भी. Shaleen and me are more of frenemies. We like to put each other down. You know, Baki, now that you know you won the trophy, बाकी 4 finalists were also quite strong. Very strong. उनको अगर आप कुछ बोलना चाहोगे क्या बोलोगे for each one of them? एक चारों को एक ही चीज नहीं बोल दूं? अलग अलग बोलोगे तो why not? एक ही चीज बोलूंगा चारों को. ठीक है, चारों तक पहुंचा दे रहे हैं. Absolutely. Well, on that note, thank you so much for removing time and doing this with us. Thanks, man. Thank you so much. All the very best. Thank you. And hope to see you soon. Yes, hopefully.